हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका किंगडम कम डिलीवरेंस के पार्ट 2 में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है किंग्स वार्डन। तो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में स्केलेट्स पर हमला हुआ था और हम टामबर्ग भाग गए थे इनको वॉर्न करने के लिए। तो उसके बाद तो आज हम देखेंगे कि टामबर्ग में क्या होता है। हम प्रोबेबली हमारे पेरेंट्स को बरी करने के लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी क्वेस्ट इस रोबोट से बात करने की। You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. It must have been terrible. I heard Dad. about your father. How They did say it he was a happen? swordsmith who moved to the countryside to make आंटी money. बाद में बात करेंगे, ओके। I can't understand why he फिलहाल left तो his रोबोट के parents, पीछे but जाना है। I'm sure he had his थोड़ा reasons. खाना पीना करेंगे। He had a fine reputation. It's a great loss. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. वेल, हेनरी को भी When you're नोबल done, मैनर्स you can go and सीखे हैं। rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. चलिए जल्दी जल्दी पेट पूजा करते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं। बहुत कुछ रखा है हमारे लिए यहाँ पे। तो चलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ओके, पेट पूजा तो हो गई। अभी जाके हम थोड़ा आराम करते हैं, सो लेते हैं थोड़ा सा। देखो, नींद आ रही है हेनरी को। ये शायद वो लॉज। ओके, ये रहा हमारा बेड। चलिए फिर बैठते हैं यहाँ पे और सो जाते हैं। तो हमें एनर्जी पूरी रीगेन करनी है। सो हम 12 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सकते। तो जितनी रीगेन होगी उतनी ठीक है। चलिए सोते हैं। क्या हुआ? Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled if you see anything out of the ordinary. सिक्योरिटी डबल कर रहे हैं। Understood. Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. ये यहाँ पे Didn't क्या कर wake रहे you, हैं? boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either.
I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. चलो सिंपैथी देने वाला तो कोई है। ओके, सो हमें इंसिडेंट के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बेसिकली हमारे क्लोज वंस मर चुके हैं, सो वी आर नॉट इन द मूड, सो आई जस्ट कांट टॉक अबाउट इट राइट I'm नाउ। sorry, my lady, but I can't talk about it. Not yet. Everyone close to me died there. बराबर। I'm sorry about what befell you. Thank you, my lady. I hope at least Radzig and those who managed to take cover are still all right. So do I. The worst thing is not being able to do anything to help them. No one can do anything against such an army. The king is in captivity, and the nobility at each other's throats. What is to become of us? God alone knows. True, lad. God alone knows. I should go. It's late. You must be tired. तो जगह ही क्यों? Good night. Good night, Ma. ए गुड नाइट, बाय बाय। अब हम आराम करेंगे। चल एंड्री, सो जा अब जल्दी से, आराम कर थोड़ा सा। ओके, उसे सब याद आ रहा है, ड्रीम्स आ रहे शायद। Help us, son. Don't be a coward. बेचारा हेनरी। Henry, wake up. You don't want to miss ए this. रोबार्ड ने भी ये कर दिया। What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. सच में स्कैरेट से? देखते हैं कौन है। टेक द टॉर्च फ्रॉम द टेबल। कौन सा टेबल? ओके ओके, ये ओके, चलो चलते हैं। बारिश गिर रही है जोर की। क्या हो रहा है? All they have to do is lean on some solid soap. Go to the battlements and talk to Sir Captain Robard. Right there. कहाँ है रोबार्ड अभी? ओके, डेविस भी यहाँ पे है। But don't be daunted by their numbers. Heed my command. Let's see, All कौन है? will be well. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night?
especially since he's lost the element of surprise after the raid on Scouts. Maybe it's not him. तो कौन हो Then सकता है? who is it? The Scouts Jivis sent to Scarlet to spy on Sigismund. Said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here. Won't we? Aye, we will. May the Lord watch over you. लेट्स सी कौन है. ओके आगे आगे कौन है? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Radzig! ओके सर राइजिक आ Is चुके his हैं. lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here Of with me. course we made it. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storm into the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. Thank God बच तो गए. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. ओके सो रेफ्यूजी की तरह रहेंगे If इसका Sigismund should मतलब. come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. बराबर है I'll बराबर. join you once I've taken care of उन्हें them. बरी Don't तो even करना think पड़ेगा. of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But अरे हम thank लॉक you. कैसे कर सकते हैं यार? We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! ओके एटलीस्ट रेफ्यूजी सेफ तो हैं. चलो कुछ तो अच्छा हुआ. फिर से टॉक टू सर रोबार्ट. Can I be of help? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. May the Lord watch over you. ओके सो हमें भी ध्यान रखना है. तो चलो जस्ट पेट्रोलिंग करते हैं सर आराम से.
खुलेगा। हमारे पास फिलहाल एक हेवियर स्नैप है। ओके, हमारे पास लॉक पिक नहीं है, लॉक पिक नहीं लिया हमने। लेट्स सी। कुछ दिख तो नहीं रहा। ओके, ये दरवाजा हम खोल सकते हैं, बट ओके ओके, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। लेट्स सी। इतनी सिक्योरिटी में हम कुछ कर नहीं सकते। मैं सोच रहा था कुछ चुरा लेते हैं। चलो इससे बात करते हैं। Jesus Christ be praised. मैं रन Good luck to you. क्या हुआ? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I हाँ, don't think फर्स्ट anything वॉच तो much है। will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. थैंक यू। तो हमें टाइम स्पेंड करना है, राइट? तो उससे पहले हम थोड़ा आसपास देख लें। ओके, प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट एरिया है। हमारे टॉर्च को रख देते हैं और आराम से अंदर चलते हैं। दरवाज़ा लगा लेते हैं। लेट्स सी। शील्ड ऑफ टाम्बर स्टील। ओके, दोनों ले लिए। मैं इसमें क्या है? ओके, एरोस। नाइस। लॉक पिक फिलहाल कर तो नहीं सकते हम, लॉक पिक नहीं है। नीचे जाना भी रिस्की होगा, या फिर जाके देखते हैं क्या होगा, वो देख लेंगे। लकीली कोई नहीं है नीचे, आई होप। यहाँ पे दो चेस्ट है और यहाँ पे कुछ नहीं। एक बार ऐसे फटाक से टॉर्च लगा के देखते हैं क्या है। देने लायक तो कुछ नहीं। चलो वापस ऊपर जाते हैं और सुबह का वेट करते हैं। पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो टी फॉर स्लीपिंग टाइम और 2 घंटे वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है? Everyone to the Bailey's office. Quickly. आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ हो रहा है शायद। ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? रुको, चलो देखते हैं इनके पीछे क्या हो रहा है। सब लोग जमा हो गए। ओह माय गॉड, शिट। प्लीज यार, फिर से नहीं, फिर से See how नहीं। the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. वेल, तो बहुत अच्छा आ जाएगा अगर अटैक नहीं किया तो। Greetings, Lord of Talmberg. Shit. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. अरे कंट्रोल कंट्रोल भाई, कंट्रोल। I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates.
Greetings, Sir Markford. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? बताना As मत। far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the Ratsik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. ओके, मना तो दिया। लेट्स सी क्या होता है। होपफुली अटैक नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं। ओके, बच गए। बहुत अच्छा बचे। देवेश वैसे होशियार दिख रहा है। आर्मी पलट चुकी है। My लेट्स lord, गो। you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. वो मेस है ही कितना हेवी, उसको इतना उठाना पड़ रहा है। डोंट वरी हेनरी, हम बदला लेके रहेंगे। ओके, तो अब क्या करना है? Bury your loved ones in Skalitz. Talk to Sir Robert. Get a horse. हॉर्स का तो कुछ पता नहीं, पर रोबर्ट से बात कर लेते Good पहले। health, you. I have to get to Skalitz. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. I have to bury my parents. Let me out before I lose my temper. Okay. If you were in my shoes, you'd do the same. Okay, इसके ज़्यादा chances Sir हैं. Robard, Let's my try. parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad. Oh but I no. won't take orders. Fail हो गया. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Okay, देखते हैं, कुछ करके जाना तो पड़ेगा. Let's see. Get out of the castle तो है. एक काम करते हैं, गेट पे जाते हैं और सीधा कटक लेते हैं बिना बताए. Let's see. गेट कीपर से बात करते हैं. जाना देगा तो ठीक है.
What do you need? I need I to need get to out get of out of here. here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. अब क्या करें? I have to bury My my mother and father were parents. left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. चलो You'll have to सक्सेस हुआ. persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Okay, I'll try and Right, think I'll of see what I something can do. else. Is there a trader here Is there somewhere? someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. अरे खाना नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his अगर life. इसके पास लॉकपिक होंगे तो हमारा काम बन जाएगा. Let's see greenery. ये कौन है? Okay, वो टाउ मिल गया. Jesus Christ be praised. Can we चलो trade? ट्रेड करते हैं. If you've got the coin. Good luck. कॉइन ज़्यादा तो नहीं है. ओके, सो उसके पास लॉकपिक है 14 रोशन के लिए. और हमने जो ये वेपन्स चुराए थे, अगर हम 8 शील्ड को सेल करें तो हमें मिल सकता है एक्चुअली. ओके, हम एक काम करते हैं, एक ही सेल करते हैं और एरोस भी रहने देते हैं. ठीक है, तो उसमें हमारा एक लॉकपिक आ जाएगा. ओके, क्लोज द डील. लॉकपिक मिल चुका है. अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. हमें जाने के लिए एक्चुअली डिस्गाइज होना पड़ेगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ. आपको याद होगा यहाँ पे हमें एक चेस्ट मिली थी, ये वो रही चेस्ट. तो बेसिकली हम करने ये वाले हैं, हम उस चेस्ट को करेंगे लॉक पे. उससे पहले आई सजेस्ट सेव कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. लेट्स सी. ओके, सॉफ्ट पॉइंट मिल गया. वेरी इजी है. तो ओके ओके, हो गया. प्रोबेबली किसी ने हमें देखा नहीं. यहाँ पे पूरा का पूरा आर्मर पड़ा हुआ है. शायद से ऊपर भी एक रूम है. ऊपर जाके देखते हैं. कोई नहीं है. कोई नहीं है. ओके, लेट्स सी. एरोज, नाइस. इसमें भी एरोज है, बहुत ही बढ़िया. ओके, यहाँ पे भी हमें एक बो और एरोज मिल चुके हैं. बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा. लेट्स होप कोई आए ना. ये भी यार. ओके, मीस भी मिल गया. नाइस. हमारा लक बहुत अच्छा है वैसे. रिलायबल ब्लेड, बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड है. डैमेज बहुत अच्छा था. तो चलिए फटाफट से निकलते हैं नीचे. जल्दी. अगर किसी ने देख लिया और हमें चेक किया तो हम पकड़े जाएंगे. सारा का सारा सामान चला जाए. ओके, हम बाहर आ चुके हैं. तो अभी हम कटकते हैं यहाँ से. और फिर एक काम करते हैं, हमें हॉर्स भी चाहिए. राइट, देखते हैं. हम एक हॉर्स के साथ आए थे. राइट, उन्होंने यहाँ रखा होगा. ओके, ये स्टील नहीं करना है. ओके, ये मिल गया. ये हमारा हॉर्स. तो चलते हैं. पर ये हॉर्स हमें वापस मिलेगा या नहीं पता नहीं. देखेंगे. पहले हम कपड़े पहन लेते हैं सारे. पूरा आर्मर पहन लेते हैं, मतलब वो हमें पहचान नहीं पाएगा. ओके, हम दिख रहे. सर रैटजिक की स्वॉर्ड हम हाथ में रखेंगे. और
वो और एरोज भी हम इक्विप कर लेते हैं। रिलायबल ब्लेड हम अभी के लिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसके लिए मिनिमम एजिलिटी 8 लगती है जो हमारी नहीं है। सो अब हम तैयार। लेट्स सी बात करके देखते हैं। I need to get out of. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. ओके समझ गया बंदा। Word about me to anyone. Good luck to you. छोड़ दिया। लेट्स गो दरवाजा खोल। नाइस वन, लेट्स गो। तो अभी हमें जाना है स्केलेट्स, राइट। फ्ली टू द कैसल एंड गेट टू स्केलेट। तो मोस्ट प्रोबेबली हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, पर हम फास्ट ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि बीच में अगर बैंडिट्स ने हमें पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम ऐसे ही जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी फिलहाल वो जो ह्यूमंस है वो शायद से नहीं गए, वो कहीं भी छुपे हुए हो सकते हैं, तो हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। लेट्स सी, बहुत मस्त दिख रहा है शैडो। ओके, कट सीन शुरू हो गया है। घोड़े को यहीं पे Wait रखते हैं for me हम। here, friend. Better to keep going on my own. ओके, तो शायद से अगर हम वहाँ पे वापस आए तो हमें हमारा हॉर्स मिल सकता है। हॉर्स मिल गया तो बहुत अच्छा है। लेट्स सी, सब जल चुका है। Looks like they've already gone. हाँ, स्वॉर्ड तैयार है भाई। चलो देखते हैं। आराम से भैया, आराम से। सबको मार दिया। ओ माय गॉड, नो मैन। चलो जाना तो पड़ेगा पेरेंट्स के लिए। कम ऑन एंट्री, चलो होम कमिंग। स्केलेट्स तक पैदल पैदल ही जाएंगे। उन्होंने सबको स्लॉटर कर दिया। एक मिनट, वो कौन है? शायद से चोर है। कौन है रे भाई तू? ओके, चोर है, ये चोर ही है। ओके, सो बेसिक आर्म्ड कॉम्बैट का गाइड है। 2 मिनट वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ओके, ये हमारा स्किल्स अभी तो नॉर्मल है, पर फिर भी स्वॉर्ड मस्त। हार गया बेटा, मर्सीफुल। ओके, हेनरी पहले से नाइट जैसे ही लग रहा है। देखते हैं इसने क्या क्या चुराया। कुछ चुराया तो नहीं तो। तो उन्हें लूट करना अच्छी बात तो नहीं है, पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें लूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
रास्ते में पता नहीं और कितने चोर मिलेंगे। ओ माय गॉड, Sweet Jesus. It's the charcoal burner. चारकोल बर्नर, जिससे हमने चारकोल लिया था उसे भी मार दिया बेचारा। बहुत ही खतरनाक हमला हुआ। ये देखिए। Hey! ओ नो, और एक चोर। रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ भाग रहे हो, रुक जा। Why चोर। did anyone do this? What did these poor souls ever do to them? बेचारों का क्या कसूर था। अब हम क्या ही कर सकते हैं। ओके, और एक बैंडेड। ए भाई, क्या चोरी कर रहा है? हाँ इधर आ, सिखाओ क्या तुझे। हमारा टीचर बहुत अच्छा था, समझा। इसे हम मरने देंगे ऐसे ही। उसे मारने में कोई है कुछ भी नहीं। वो प्रोबेबली खुद मर जाएगा थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए हम स्केलेट्स में। ओके, ये रोड शायद से बंद है, उधर से जाते हैं। कितने बैंडेट्स मिल रहे हैं, ये देखो, ये और एक है। चलो ट्राई करते हैं इसे बो से मारने का। देखते हैं हमारा निशाना कैसा है। निशाना तो बहुत ही बेकार है। चलो हमारी स्वॉर्ड ही मस्त चलती है। अरे अरे, तू नहीं हरा सकता हमें। ओके, सरेंडर कर दिया इसने। लेट हिम गो डिसआर्म्ड। I'll let you go, but the weapon stays here. चल भाग यहाँ से जल्दी से, भाग जल्दी। एंट्री अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है कि नहीं। ओके, ओ माय गॉड। Bailiff. बेलिफ, You're like me. Die with a sword in his hand. ये स्वॉर्ड बहुत अच्छी होती है गैस, तो हम इसे ले लेते हैं। लेट्स सी, सबको मार दिया उन्होंने। ओ माय गॉड। You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. ओ नो, बियांका। No. Why? Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. बेचारा I'll हेनरी। find the bastards that did this to you. रुको, उसकी रिंग और शेवियस नाम से हम रख लेते हैं। I'll take care of my parents. उसकी याद में हम उस रिंग को पहन के रखेंगे। हेनरी के मम्मी पापा कहाँ हैं? ओ ये रहे। ओ नो। बेचारा हेनरी। Why did
did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. रिवेंज तो हम लेके ही रहेंगे। But first, I have to find this shovel and take care of you. शवल कहाँ पे मिलेगा अब? उन्हें बरी करने के लिए खड्डा तो खोदना पड़ेगा। I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. ओ हाँ, पहले एपिसोड में आपने देखा उसने कहा था। I can do that much for you. अगर आपने पहले एपिसोड अभी तक नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी जाके देखिए, बहुत मस्त एपिसोड था। ओके, सो हमें ढूंढना पड़ेगा शवल। अब कहाँ मिलेगा? रुको, यहाँ पे डॉग की आवाज आ रही है क्या? कोई तो जिंदा है, मतलब कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही शायद। ओ नो, कोई तो है। ओ, ये डॉइचिस का लड़का है, जिसके घर पे हमने वो फेंका था। What's going on? Mishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Mutt. Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? ये शायद कुछ तो कर रहा था। In his the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? हाँ, मतलब ये कुछ कर रहा था। I want to bury my parents. So bury them and leave me be. अरे, ऐसी क्यों बात कर रहे हो? Have I disturbed your looting? I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of corn. And now that I think of it, इतना खराब है, ये भी bandit जैसा है। quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher did? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. So that's the way of it? Not without a sword, huh? क्या? This isn't the end, fucker! This isn't the end. देख लेंगे बाद में उसको। चलो, स्पेड तो मिल गया। अब लिंडन ट्री के नीचे हमें खड्डा करना होगा। पर पहले आपको याद होगा कि हमने हमारे घर के चेस्ट में कुछ सामान रखा था। वो सोल्जर को नॉकआउट करके जो हमने चुराया था वो रखा हुआ है, तो पहले जाके हम उसको लेते हैं। ओह नो, हमारे पापा का फोर्ज। हमारा घर अभी भी अच्छा है। ओके, थोड़ा सामान बाहर आ चुका है, पता नहीं कैसे, पर ओके, चेस्ट यहीं पे और उसका सब सामान भी यहीं पे, सब कुछ है। 5 हेवी स्नैप्स है, ये सब ले लेंगे। बहुत ओवरलोड हो गया है। ये रहा लिंडन ट्री, तो ये अच्छी जगह है।
Let's start digging. बेचारा हेनरी। वो डॉग भी बेचारा अकेला ही है, यही करेगा वो। इतना क्यूट है वो डॉगी। ये हमारे साथ आ गया तो बहुत अच्छा होगा, साथ में रह सकते हैं उसके साथ। चलो पेरेंट्स को बरी करते हैं। Damn it all. उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो वैसा कर सके, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है वो। How am I going to do this? Do you need some help? ओ ओ Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? शिट, ये लेके आ गया। कौन है ये? Zbyszek? Who do you think we are? Francis Oh and shit. brothers? We're here to rob you of everything you've got. Well, Especially that fine blade that's of no use to a peasant. अब क्या ही like you करेंगे? anyway. Banish the thought. It is my father's लेट्स सी blood. क्या होगा। You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. शिट। वेल, देखते हैं। अब हम यहीं पे एपिसोड खत्म करते हैं। हम देखेंगे आपको अगले एपिसोड में देखने मिलेगा कि क्या होता है। तब तक आपको वेट तो करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं पहले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगला एपिसोड रिलीज होते ही अगले एपिसोड की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो बाद में मिलते हैं गाइस। बाय बाय, सी यू लेटर।